નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાનગંગા વિદ્યાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ ઓનલાઈન એજ્યુકેશન અંતર્ગત આપનું સ્વાગત છે. આપણે હિન્દીમાં પાઠ 3 અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સ પાઠ જોઈશું. આના લેખિકા છે ડૉક્ટર કોકિલા પારેખ. આપણે તેમનો લેખ જોઈએ. डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसद जिला गांधीनगर में हुआ था. आपने M.Phil और विद्यावाचस्पति PhD की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की. आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है. अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है. महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है. हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है. आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत हैं. प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्री की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियां और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પાઠમાં શું જોવાનું છે? આપણને અહીં અંતરિક્ષનું બધી માહિતી તો આપવામાં આવી જ છે, સાથે સાથે આપણને સુનીતા વિલિયમ્સ જે અંતરિક્ષ પરીના નામે ઓળખાય છે તેના જીવનની પણ માહિતી આપવામાં આવેલી છે. તો આપણે જોઈએ આ પાઠ. 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डा पर अमेरिका से एक हवाई जहाज़ आ पहुंचा. तब एटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी. उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स. महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं. वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है. युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है. सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई. कयो दिवस होय छे? 20 सप्टेम्बर 2007 अमदावाद હવાઈ મથક પર અમેરિકાથી એક હવાઈ જહાજ આવવાનું હતું. ત્યારે ત્યાંના લોકોને એટલી જ ઉત્તેજના એટલે કે ઉત્સાહ હોય છે, જેવી રીતે કે એટલાન્ટિક્સ યાન પૃથ્વી પર આવવાનું હોય છે. કેમ? કારણ કે એમાં કોણ હોય છે? ગુજરાતનું ગૌરવ, ભારતની શાન અને આખા વિશ્વની બેટી કોણ? સુનીતા વિલિયમ્સ હોય છે. આજના સમયમાં દરેક મહિલા કોઈને કોઈ ક્ષેત્રમાં એ આગળ જ છે. તે ઉચ્ચથી ઉચ્ચ પદ હાસિલ કરી શકે છે. બધા જ ક્ષેત્રોમાં આજે મહિલાઓ જોવા મળે છે. એટલું જ અસ્તિત્વ મહિલાઓએ અંતરિક્ષમાં પણ મેળવ્યું છે. પોતાનું અસ્તિત્વ અંતરિક્ષમાં સ્થાપિત કરેલી કલ્પના ચાવલા પછી કોનું નામ આવે છે? સુનીતા વિલિયમ્સનું નામ આવે છે. એ સુનીતા વિલિયમ્સ એક અંતરિક્ષમાં જઈ અને પાછી ફરી અને દરેક મહિલા અને ભારત માટે પ્રતિષ્ઠા અને ગૌરવનું ઉદાહરણ આપેલું છે. हमारे देश के हरियाणा प्रांत की करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था. हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है. दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई. कल्पना के सपनों को और खुद के दीवा सपनों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है. કલ્પના ચાવલા ક્યાંની હોય છે? એ હરિયાણાના કરનાલ શહેરની હોય છે. તેનું પણ સપનું હોય છે અંતરિક્ષ યાત્રી બનવાનું. તે પહેલી મહિલા અંતરિક્ષ યાત્રી હોય છે જે જાય તો છે, પરંતુ દુઃખ શું હોય છે કે એ પોતાનું સપનું પૂરું કરે છે અને આપણા બધા માટે એક સ્વપ્ન બનીને રહી જાય છે. કારણ કે જ્યારે એ સ્પેસ શટલથી આવતી હોય છે, અંતરિક્ષથી સ્પેસ શટલમાં, ત્યારે એ ક્રેશ થઈ જાય છે અને જેમાં એનું દુઃખદ મૃત્યુ થાય છે.
રાકેશ શર્મા એ કોણ છે? એ પ્રથમ ભારતીય અંતરિક્ષ યાત્રી હોય છે. તો આવી રીતે સુનિતા વિલિયમ્સ એ કલ્પના ચાવલાના સ્વપ્નને કે એક મહિલા અંતરિક્ષમાં જઈને પાછી આવી શકે છે એ સ્વપ્નને પણ અને પોતાના સ્વપ્નને એ પોતાનું લક્ષ્ય બનાવી જીવનનો મુખ્ય ધ્યેય બનાવી અને એ આ મુકામ સુધી પહોંચે છે. सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है. उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजरात कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है. सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है. उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाणा जिले के झुलासन गांव में हुआ था. सुनीता એ કોણ છે? એક ભારતીય છે. એ આપણા માટે ગર્વની બાબત છે. પણ આપણને થાય કે એમનું નામ તો સુનિતા વિલિયમ્સ છે, તો એના નામની પાછળ તેની સરનેમ તો વિલિયમ્સ લાગે છે, તો ભારતીય કેવી રીતે હોય એવો આપણને પ્રશ્ન થાય ને. તો એ પોતે ભારતીય નથી પરંતુ એ મૂળ ગુજરાતથી જોડેલી છે. કેવી રીતે? એના પિતા દીપકભાઈ પાંડ્યા, એમના પપ્પાનું નામ શું હોય છે? પિતાનું નામ દીપકભાઈ પાંડ્યા. તે ક્યાંના હોય છે? ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લાના झुलासन गामना होय छे. उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई. अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की. डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गई. वे मैसाचुसेट्स के कार्ल माउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे. उन्होंने उस्बाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की. पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है. એટલે એમના પિતાએ પોતાનું અડધું જીવન ક્યાં વિતાવ્યું? ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લાના ઝુલાસન ગામમાં વિતાવ્યું હતું. ત્યાર પછી એમણે અમદાવાદમાં શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું, ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું. ત્યાર પછી 1960માં તેઓ ડૉક્ટરી સેવા આપવા અને શીખી અને અમેરિકા ચાલ્યા ગયા. ત્યાં ક્યાં રહેતા હતા? મેસાચુસેટ્સ કાર્લ માઉથના એ રહેતા હતા અને ત્યાંના એક પ્રસિદ્ધ ન્યુરોસર્જન હતા. ન્યુરોસર્જન એટલે મગજની સર્જરી કરવાવાળા. ત્યાં એમણે યુગોસ્લાવિયનની યુવતી ઉર્સબાઇન બીની નામની સ્ત્રી સાથે લગ્ન કર્યા. આવી રીતે તેમના પિતા દીપક પંડ્યા અને માતા ઉર્સબાઇનના એમના કેટલા પુત્ર હોય છે? જય, દીના અને સુનિતા નામના 3 બાળક હોય છે, જેમાં સુનિતા એ સૌથી નાની હોય છે. सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था. मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी. सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी. वह मेहनती थी. घर वाले उसे प्यार से सुन्नी कहते थे. 6 साल की सुन्नी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था. तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है. बचपन का संकल्प उसने साकार किया. सुनीताનો જન્મ ક્યારે થયો હોય છે? 19 સપ્ટેમ્બર 1965માં ઓહિયો અમેરિકામાં એનો જન્મ થયો હોય છે. ત્યાં એ પહેલાંથી જ મુક્ત વાતાવરણમાં રહી હોય છે, તેથી એનામાં સાહસિક વૃત્તિઓ કંઈક ને કંઈક નવું કરવાનું એનામાં ઉત્સાહ હોય છે. તે બાળપણથી દોડ, સ્વિમિંગ, ઘોડેસવારી, બાઇકિંગ, ધનુર્વિદ્યા, સ્નોબોર્ડિંગ જેવા અલગ અલગ સાહસ ભરેલા ખેલો અને કામો કરવામાં માહેર હોય છે ને ભાગ પણ લેતી હોય છે. અને તે ખૂબ જ મહેનતી પણ હોય છે. ઘરવાળાઓ તેને શું કહેતા હોય છે? પ્યારથી સુન્ની કહીને બોલાવતા હોય છે. સુનિતા વિલિયમ્સ એ 6 વર્ષની હોય છે જ્યારે એણે પ્રથમ જે નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ હોય છે, જેણે ચાંદ પર પગ મૂક્યો હતો, તેને જોઈ અને પોતાના મનમાં નિશ્ચય કરે છે કે તેને પણ આવું જ કંઈક કરવું છે. તેનું બાળપણથી જ એનું આ अंतरिक्ष में जवानुं सपनू होय छे, जे ए पूरू करे छे. उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई. यूनाइटेड स्टेट नेवल अकेडमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया. इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया.
इसके पहले 1987 में नेवल अकेडमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमिश्नर अधिकारी, बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा में जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। सुनीता विलियम्स क्या भणेली होय छे? ए हाई स्कूल में मैसाचुसेट्स में भणेली होय छे। यूनाइटेड स्टेट नेवल एकेडमी मेरीलैंड थी तेणे भौतिक विज्ञान में स्नातक करेलू होय छे। त्यार पछी 1995 में ते इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अनुस्नातक एटले आगळनुं ए भणे छे। एनी पहला ए 1987 में नेवल एकेडमी व्यावसायिक अनुभव माटे जोड़ाई छे, ज्यां सौथी महत्वनुं शुं होय छे? साहस अने श्रमनी प्रवृत्तिओ महत्वनी होय छे। त्यारबाद ते नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमिश्नर अधिकारी तरीके बेसिक डिवाइनिंग ऑफिसरनो पद मळे छे। ए हेलिकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त करे छे, हेलिकॉप्टर चलाववानुं शिक्षण प्राप्त करे छे। त्यारबाद ए प्रशिक्षण पछी शिक्षण मेळव्या पछी ऑफिसर इंचार्ज बने छे। सुनीता ए यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट कोर्स माटे एने पसंद करवामां आवे छे। हवे आ पायलट बनवानी सिद्धिने ए तेनुं अंतरिक्षमां जवानुं प्रथम कदम माने छे। अंतरिक्षमां जवानी तेने खूब ज इच्छा होय छे, तेथी हिम्मत हारती नथी। आ एनी हिम्मतथी तेने नासामां जवामां सफल थाय छे। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। त्यारथी आज सुधी सुनीता ए नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में ते ए बीजा प्रयास में ए पोते पसंदगी पामे छे। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक अने पायलट है, पण अंतरिक्ष में जनारा केवल 100 ज लोको छे। सुनीता ने खास मित्र और सह-अध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता कोनी साथे लग्न करे छे? तेनो खास मित्र और सह-अध्यायी माइकल विलियम्सनी साथे लग्न करे छे। आवी रीते ते सुनीता पंड्या थी सुनीता विलियम्स बने छे। माइकल विलियम्स ए सुनीता ने तेना स्वप्नने पूर्ण करवामां खूब ज साथ आपे छे। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला। सुनीता ने अंतरिक्ष परी बनाववामां सौथी महत्वनो हाथ अने प्रेरणा स्त्रोत कोण होय छे? कल्पना चावला होय छे। 8 वर्षों ए अंतरिक्ष में जवावाળી बीजी महिला अने ते सकुशल पाછી આવે છે, તેથી લોકો રાહતની सांस લે છે। એટલે કે જ્યારે કલ્પના ચાવલા ગઈ હોય છે તો એ ફરીથી આવતી નથી, પરંતુ એ ત્યાં ક્રેશ થાય છે, સ્પેસ શટલ ક્રેશ થાય છે, એમાં એ મૃત્યુ પામે છે। જ્યારે સુનીતા વિલિયમ્સે પાછી ફરે છે, તેથી લોકો એનાથી રાહત મેળવે છે। એ જ્યારે પાછી આવતી હોય છે સુનીતા વિલિયમ્સ, ત્યારે એ સમયે એણે લોકોને કીધું હોય છે કે નાસામાં કલ્પનાની સાથે કામ કરવાનું તેનો અનુભવ ખૂબ જ સારું હોય છે। તે બંનેના શોખ, બધી જ વસ્તુ અલગ અલગ હોય છે, પરંતુ જે એ બંનેને એક દોરથી બાંધતું હોય છે તે શું હોય છે?
તે બંને ભારતીય હતા. તે બંનેને ભારતીય સંગીત પણ ખૂબ જ ગમતું હોય છે. અને સુનિતા વિલિયમ્સ કહે છે તેને ત્યાં નાસામાં કલ્પનાની સાથે ઘણી બધી વસ્તુઓ શીખવા પણ મળે છે. जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया. अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया. कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई. सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है. खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है. लौटने में मुश्किल होती है. आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है. हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है. दिमाग तैयार होने में समय लगता है. सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया. वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की. उनने गोताखोरी में अनुभव होने वाली भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की. अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना. वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी. હવે જૂન 1998માં સુનિતાને નાસા માટે પસંદગી કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી ઓગસ્ટના 1998માં તે નાસામાં જઈ અને એનું શિક્ષણ શરૂ કરી દે છે. ત્યાં કડે પ્રશિક્ષણ એટલે કે ખૂબ જ મહેનત પછી સુનિતા અંતરિક્ષ યાત્રા માટે તૈયાર થાય છે. સુનિતા કહે છે કે સ્પેસ સ્ટેશનમાં રહેવું એ આસાન નથી. ત્યાં ખૂબ જ મુશ્કેલીઓ પડે છે. ખાવાથી લઈને નહાવાથી બધી જ વસ્તુમાં મુશ્કેલીઓ આવે છે. લौटने में मुश्किल होती है એટલે કે આવવામાં પણ ત્યાંથી મુશ્કેલી પડે છે. શરૂમાં તો ચાલવામાં ફરવામાં પણ મુશ્કેલી થાય છે. આપણા હાડકાં કમજોર થઈ જાય છે. આપણા દિમાગને એ વસ્તુ માટે તૈયાર કરવામાં ખૂબ જ સમય લાગે છે. सुनीताए બધા માટે शिक्षण મેળવેલું હોય છે. वैज्ञानिक तकनीकी में भारे व्याख्यान रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की. रूसમાં રહી અને તે અંતરિક્ષ કાર્યક્રમો અને ત્યાંના યાન અને બધી જ વસ્તુ માટે એ શિક્ષણ અને માહિતી પ્રાપ્ત કરે છે. ત્યાર પછી ત્યાં થવાવાળાના અનુભવ અને ભારહીન સ્પેસ વોક માટે પણ એ શિક્ષણ અને સહાયતા પ્રદાન કરે છે. અંતરિક્ષના સંદર્ભમાં તે ઘણી બધી જાણકારી અને મુશ્કેલીઓ પણ મેળવી લે છે. આવી રીતે ઘણી મહેનત ઘણા પરિશ્રમ કર્યા બાદ અને શિક્ષણ મેળવ્યા બાદ તે હવે અંતરિક્ષમાં જઈ અને ત્યાં જે પણ મુશ્કેલીઓ આવે તે બધાનો સામનો કરવા માટે તૈયાર થઈ ચૂકી હોય છે. सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही. प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे. હવે આવી રીતે એ બધી જ વસ્તુઓ મેળવી અને શિક્ષણ મેળવી અને અંતરિક્ષમાં જવા માટે તૈયાર થાય છે. તે ત્યાં તેની તૈયારીમાં એ 9 દિવસ પાણીની અંદર પણ રહે છે. આ પણ એના એક શિક્ષણનો ભાગ હોય છે. આવી જ રીતે શિક્ષણ મેળવતા મેળવતા કેટલો સમય લાગે છે? 8 વર્ષ જેટલો લાગે છે. डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस स्टेशन से फ्लाइट इंजीनियरिंग के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची. 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की. पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी. यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था. अर्थात सुनीता 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाई. इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया. इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी थी. अंतरिक्ष के बॉस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई. सुनीता ने अंतरिक्ष में 198 दिन और 4 घंटे के सैनोन ल्यूसिक का रेकॉर्ड तोड़ा. હવે આવી જ રીતે ઘણા બધા અભ્યાસ કર્યા બાદ
डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा थी केनेडी स्पेस स्टेशन थी फ्लाइट एंजीनियरिंग तरीके डिस्कवरी मिशन में ते सामेल थाय छे। त्यार पछी 10 डिसेम्बर 2007 थी एटलांटिक यान अंतरिक्षयानथी सुनीता स्पेस स्टेशन पहुँचे छे। 17 डिसेम्बर अंतरिक्ष में ते पोतानो प्रथम कदम मूके छे। पृथ्वी थी 360 किलोमीटरनी दूरी पर त्या कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशननी गति प्रति घंटा एटले के 1 मिनिट 27,744 किलोमीटरनी होय छे। अहीं रोजे रोज पृथ्वी 15.7 जेटलो चक्कर कापे छे। एनो अर्थ ए के सुनीता ए पृथ्वीना 2967 जेटलो पोतानो अंतरिक्ष में प्रवास करे छे। आ अभियान में ते सुनीता 29 कलाक 17 मिनिट जेटली स्पेसवॉक करी अने अंतरिक्ष में पोतानो रेकॉर्ड बनावे छे। आनी पहला एप्रिल मास में 4 कलाक अने 24 मिनिटनो मैराथन जीतवा वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बनी चूकी छे। अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन में 4.5 कलाक में 42 किलोमीटरनो सफर कापवा वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनेली सुनीता ए अंतरिक्ष में 188 दिवस अने 4 कलाकनो शेनॉन ल्यूसिकनो रेकॉर्ड तोड़े छे। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियाँ और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसे कि साइकिलिंग, चलना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बा बंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियाँ और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिक तक पहुंचाए। सुनीतानो 6 महीना सुधीनो अंतरिक्ष में रहेવાનો अनुभव होय छे। ते कहे छे कि त्यां व्यायाम करवो खूब ज जरूरी छे, कारण के मांसपेशी, हड्डी, आपણા हाड़काओ एनी शक्ति बनावी शकाय। शरीर आपणुं लचीलुं राखवुं खूब जरूरी छे। त्यां आपणे साइकिलिंग करता रहेवुं जोईए, दौड़तुं रहेवुं जोईए, हवामां तरवानुं आदि आपणने करवुं जोईए। अंतरिक्ष में जईने आपणे सुवानुं खूब ज मुश्केली होय छे। त्यां आपणे रोज बंद डब्बानुं भोजन, भारहीनता, शरीरने लचीलुं राखवुं, आ बधुं तीव्र गतिथी खतम थतुं जाय छे। एटले के आपणने पोताना स्वास्थ्यनुं ध्यान राखवुं ए पण खूब ज अघरुं होय छे। अने आपणने त्यां मांसपेशीओ अने आपणा हाडकानी तेज क्षति एटले के खतम थवानी आवी घणी बधी समस्याओ पण होय छे। एटले के अंतरिक्षमां जईने रहेवुं ए पण आसान होतुं नथी। त्यां पण आपणने खूब ज मुश्केलीओ आवे छे। सुनीताने आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीना प्रवास दरमियान घणा महत्वपूर्ण बीजा पण कार्यों कर्या होय छे। नवी खोज पण एणे त्यां करी होय छे, जेवी रीते के ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वीनुं निरीक्षण करवुं, शिक्षा अने टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जेवा विषयों पर पण एणे काम कर्या होय छे। आनाथी बीजुं जे लोको न्यूट्रिशनथी संबंधित अनुसंधान पर जे काम करता होय छे वैज्ञानिको, ते जे ब्लड सेम्पल लावेली होय छे ए दरमियान जमा कर्या होय छे ते पण एमने आपे छे, कारण के ए लोका पण कंईक अलग बीजी पण शोध करी शके। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारे पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझते रहते हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरात तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि दुनिया से विश्व सीमाओं में
यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य मनोहर था। 19 जुलाई 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम सब कहते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाया है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। સુનીતાને સ્પેસ સ્ટેશનમાં જઈ અને સૌથી મહત્ત્વની વાત શું લાગે છે કે ત્યાંથી એને આપણું ગ્રહ જે પૃથ્વી છે તે ખૂબ જ સુંદર લાગે છે। ત્યાંથી એને પૃથ્વીને દુનિયાને એક અલગ રીતે જોવાનો મોકો અને અંતરદૃષ્ટિ મળે છે અને એ પણ જોઈ શકે છે કે આપણે આપણા ગ્રહને આવનારી બીજી પેઢી માટે કેવી રીતે બચાવી શકીએ। અહીં અંતરિક્ષમાં બધા જ મળી હળીને કામ કરવા માટેની ખૂબ જ સારી જગ્યા છે એવું તેને ત્યાંથી લાગે છે અને એ વિચારે છે કે અહીં તો કેટલું સરસ છે, આપણે પૃથ્વી પર નકામા વિવાદોમાં ઉલઝ્યા કરીએ છીએ। નવી દિલ્હી અમેરિકી સેન્ટરમાં અંતરિક્ષયાન જ્યારે ભારત પરથી ગુજરે છે ત્યારે વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા સવાલોમાં સુનીતા જવાબ આપતી હોય છે કે અહીંથી વિશ્વ જે અલગ અલગ સીમાઓમાં વહેંચાયેલું છે એવું કંઈ જ નજર આવતું નથી। ત્યાંથી ફક્ત શું દેખાય છે? આપણો સુંદર ગ્રહ પૃથ્વી, આપણા ગ્રામીણ ઇલાકાઓ, સુંદર પહાડો, આસમાની રંગ, સુંદર મહાસાગર, હરાહરા એટલે કે હરે ભરેલા મેદાનો અને અનેક રંગોમાં બિછાયેલી આપણી જમીન દેખાય છે। અહીંથી દ્રશ્ય એ ખૂબ જ સુંદર લાગે છે। આવી જ રીતે 19 જૂન 2007 સાથે સ્પેસ શટલ એટલાન્ટિક સુનીતા સમેત 7 બીજા અંતરિક્ષ યાત્રીઓને લઈ અને ધરતી તરફ આવે છે। આખું વિશ્વ સુનીતાને સહી સલામત રીતે આવવા માટેની એ પ્રાર્થનાઓ કરે છે। 194 દિવસ 18 કલાક અને 58 મિનિટનો રેકોર્ડ બનાવી સુનીતા 22 જૂન 2007ના દિવસે ફરી ધરતી પર આવે છે। આવી રીતે સુનીતાનું આ આશ્ચર્યજનક કામ જોઈ બધા જ ભારતીયો અને ગુજરાતીઓનું સર માથું એ ગર્વથી ઊંચકાઈ જાય છે। તે લોકોને ખૂબ જ ગર્વ થાય છે। આવી જ રીતે જો નારીઓએ એટલે કે સ્ત્રીઓએ આપણને ઊંચું સ્થાન પ્રાપ્ત કરવું હોય, દરેક જગ્યાએ આપણે સિદ્ધિ મેળવવી હોય તો આપણે સુનીતા જેટલું જ સાહસી અને મહત્વાકાંક્ષી બનવું જોઈએ। તો અહીં આપણો આ પાઠ પૂર્ણ થાય છે। આપણે આ પાઠમાં સ્પેસ શટલ વિશે પણ જોયું, આપણે અંતરિક્ષ યાત્રાની પણ ઘણી માહિતી મેળવી, સુનીતા વિલિયમ્સના જીવનની માહિતી પણ મેળવી। મજા આવીને પાઠમાં? થેન્ક યુ।